Hello, student of class plus 2. Good evening. Namaskar. Last time we have done drift velocity in a conductor. We know that in every conductor there is a large number of electrons. They are freely moved like the molecules of the gas. Their random speed is 10 raised to 5 meter per second. But when some they such that their average thermal velocity is zero, because due to vector quantity they are randomly moved. Speed तो होगी, velocity क्या है, zero. But when some electric field is applied across the two ends of the conductor, the free electrons moves toward the positive terminal of the conductor. On their way they are collided with the nuclei of the conductor atoms and lost their gain kinetic energy. They are accelerated. They form the curved path. In this way, they lost their gain kinetic energy. Again and again, they are collided. In this way, they get a very little velocity and number of electrons in addition to thermal velocity. That little velocity is known as drift velocity. जो हमने लास्ट टाइम की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई थी हमारे पास V D इज इक्वल टू E by m into tau. Minus sign show that the electrons move in a direction opposite to that of the electric field. With the help of electric field, we now are going to drive the current relationship between the current and drift velocity, and Ohm's law in the terms of drift velocity, resistivity, then temperature on which the resistance of the conductor depend, and so on. Let us drive an expression for the relationship between the current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. Right? Drive. Consider a conductor of length L of area of cross section A. Let constant potential difference V is applied across the two ends of the conductor. Free electrons move with the velocity, drift velocity, towards the positive terminal of the conductor. Right? Let n is the number of the electrons per unit volume. N is the number of electrons per unit volume. Right? A is the area of the conductor, L is the length of the conductor. हमने ये नीचे लिख दिया है, ऊपर भी दोबारा लिख दिया है. A. So the total charge in the conductor Q is equal to NaLe. Right? Q is equal to Ne होता है, Al से कर दिया, total number of charge आ गया. अब we have to find out I is equal to Q by T. Right? Q की वैल्यू पुट कर देते हैं. Q इज इक्वल टू NaLe. T की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. T की वैल्यू आएगी L by Vd. L is the distance covered by the electrons, that is the length of the conductor. Vd is the drift velocity. Now I is equal to NaLe Vd अपॉन L. L से L कैंसिल हो गया, I की वैल्यू आ गई हमारे पास ANEVD. This is the value of the current in terms of drift velocity. If we put the value of the Vd here, then I become AE by m into tau. AN E square E by m into tau. राइट? ये आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. राइट? नाउ यूजिंग द करंट फार्मूला we are drawing Ohm's law. Ohm's law ड्राइव करेंगे. Ohm's law states that current flowing through the two ends of the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor, such that the temperature, pressure and
another factor of the conductor remains constant, right? Ohm's law in terms of drift velocity. We have derived relationship in the current and drift velocity. I is equal to A N E V D. Right? Consider conductor of length L. A is the area of cross section. N is the number of electrons per unit, number of free electrons per unit volume. Then Q total charge NaLe. I is equal to Q by T. NaLe by T की वैल्यू डाल दी हमने L by VD. VD ऊपर जब आएगा L से L cancel NaVVD. When we put the value of VD E by M into tau that we have derived last video, then I becomes ANE square E by E M divided by M into tau. Now Ohm's law in terms of drift velocity. Then we have further used the resistivity. Ohm's law in terms of drift velocity. Yes, Ohm's law in terms of drift velocity. As we know that I is equal to ANEVD. Before we derive the Ohm's law in drift velocity, but first we say that what Ohm's law say. Ohm's law said that current flowing across the two ends of the conductor I is directly proportional to V. Potential difference across the two ends of the conductor or V is directly proportional to I. V is equal to proportional symbol हटाएंगे R. R is constant say V by I. We have to derive I V by I. Now I is equal to A N E V D. A की वैल्यू डाल दे A N V D की वैल्यू डाल देते E by M into tau. As we know that electric field is equal to potential by length. E की वैल्यू होते हैं, E का फार्मूला है हमारे पास V by L. Put here A N E square V by M L into tau is equal to I. V by I चाहिए, हम ये नीचे रख देंगे, रेसिप्रोकल ये ऊपर ml, बाकी सारा नीचे V और ml by ANE square into tau is equal to V by I. V by I is equal to R. This is the resistance in terms of drift velocity, where tau is the relaxation time. As we increases the temperature of the conductor, temperature resistance temperature पे depend कैसे करता है? When we increase resistance increases with increase in temperature. As we increases the temperature of the conductor, atoms and ions are frequency of the collision of the electrons with the atoms and ions increases. Vibration frequency of the collisions increase करेगी atom ion से. As its frequency is increases, time period is decreases, tau decreases, frequency increases, tau decreases. Tau is inversely proportional to R. Tau decreases, therefore R increases. R is increases with increasing the temperature. इतना ड्राइव हो गया. Now the factors upon which the resistance of the wire depend. हमने क्या कर लिया? Relationship between the current and drift velocity. Ohm's law R की वैल्यू आ गई ml by ANE square tau. Next हम कर रहे हैं factors upon which the resistance of the wire. With the help of this we also find out the resistivity. Factors upon which the resistance of the wire depend. Last time हमने 10th में भी कर रखा है ये अपने स्टूडेंट्स. Factors upon which the resistance of wire depend. Factors upon which
resistance of wire depend. Number one, resistance is directly proportional to length of the wire. Number two, inversely proportional to area of the wire. जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, मोटी तार का रेजिस्टेंस कम। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे, आर रो एल बाई ए, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, रो एल बाई ए, वेयर rho is called resistivity of wire. Rho is called resistivity of wire. Now resistivity का फार्मूला हमने ड्राइव करना है in terms of drift velocity. As we know that R is equal to ml by a n e square into tau, but we require only L by A छोड़ दो, M भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, टो भी कांस्टेंट है, तो M A N E स्क्वायर L बाय A छोड़ देंगे हम, L बाय A छोड़ देते हैं, M N E स्क्वायर एम एल बाई ए छोड़ के ए एन ई स्क्वायर इंटू टो, एन ई स्क्वायर इंटू टो आ जाएगा, ये हमने ए छोड़ दिया, तो दिस इज नॉन एज रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ए स्मॉल रखना है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई हमारे पास, कांस्टेंट थी ना रो की वैल्यू कितनी आई, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, राइट। सिमिलरली एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, सिमिलरली रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the frequency of the collision of the electron with the atom and ion increases, frequency increases, time period decreases, tau decreases, वो also increases. ओके, यहाँ तक का आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने करा ड्राइव, राइट। एक रह गया था हमारे पास डिमेंशनल फार्मूला, हम आर का निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास V बाई आई, V इज इक्वल टू होता है हमारे पास W बाई क्यू आई, W का फार्मूला डालेंगे ML2T माइनस 2, Q का डालेंगे IT, Q इज इक्वल टू IT, राइट, I इज इक्वल टू Q बाई T, Q का डालेंगे हम A इंटू T, सॉरी A इंटू T, और I का फार्मूला डाल देंगे Q बाय T था, I इज इक्वल टू Q का डाल देंगे 80, I इज इक्वल टू Q का डाल दिया था ना हमने A इंटू T, फिर Q का A2, फिर हमारा I है, I का आएगा Q बाय T, Q बाई टी, A बाई टी बाई टी, T से T कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास ML2T माइनस 3, ML2T ऊपर जाएगा -3, A की पावर -2, A की पावर -2, यस। यहां तक आज हमने करना था, A की पावर -2 आ गया ना यहां से, राइट। V का डाल दिया W बाई क्यू, I इज इक्वल टू क्यू नीचे आ गया, AT बाई A बन गया, AT डाला, ML2T माइनस 3, A की पावर -2, दिस और
रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओम। जब हम V की वैल्यू डालेंगे 1 वोल्ट, I करंट डालेंगे 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड क्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लो। R इज इक्वल टू रो L बाई A था। रो की डेफिनेशन भी आ जाएगी हमारे पास, L की वैल्यू डालोगे 1, A की वैल्यू 1, R इज इक्वल टू रो resistivity of the wire is equal to resistance of the wire of unit length and unit cross sectional area। कल हमने की थी लास्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, E बाई M इंटू टो। नाउ अब हमने करा using the drift velocity we derive relationship between the current and the drift velocity I is equal to ANEVD, राइट। उससे नेक्स्ट हमने करा ओम्स लॉ ड्राइव करा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ml upon an e square into टो, राइट, ml upon an e square into टो, और resistance is inversely proportional to time period with increase in the temperature tau decreases or increases, similarly rho also increases। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड जो उनसे भी मोबिलिटी या फिर जे करंट डेंसिटी से लेके हम सेकंड यूनिट जो ड्राइव कर रहे हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, डू हार्ड वर्क, बाय बाय।